से किसी मौसम में बॉर्डर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अंधेरी रात में जवानों को कोई कठिनाई, इसलिए विभाग ने फ्लड लाइटिंग की है। सड़क और भवन निर्माण में गैबियन, जियो ग्रिड और जियो टेक्सटाइल जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो यहाँ की दलदली और रेतीली मिट्टी को रोकने और समुद्र की धारदार लहरों के विरुद्ध मजबूत निर्माण के लिए जरूरी है। यहाँ की मिट्टी हवा और पानी में मौजूद सल्फेट दुष्प्रभावों को रोकने के लिए निर्माण में फैक्ट्री में तैयार उच्च ग्रेड व निम्न क्वालिटी के प्रीकास्ट आरसीसी का प्रयोग किया जा रहा है। इस इलाके में दूर संचार तंत्र का अभाव है। ऐसे में अगर किसी वाहन में खराबी आ जाए तो दूर दूर तक पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तेज खारी हवाओं के थपेड़ों और चिलचिलाती धूप में रहकर केवल सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों के जान है। समयबद्ध तरीके से निर्माण कार्य राष्ट्र CPWD। Constructed at a cost of rupees 47 crore, SASP Yatri Niwas at Chandrakot is one of the fastest projects completed in UT of Jammu and Kashmir. The Principal Secretary to the Honorable Lieutenant Governor on March 1921 to Ramban, and after selection it was decided that a fully is in need of the R and Ramban district, in view of the fact that the district often witnesses stoppage site shooting stones and due to mudslides due to ongoing works on the of the national highway by NHAI, and also because of the suspension of the Holy Yatra due to inclement weather. During traffic disruptions, it becomes a huge challenge in Ramban district till restoration of movement of convoys. Immediately after the site was finalized, the work on execution of the project was entrusted to CPWD on the month of April 2021. In only 14 months, with support and facilitation of the district administration, Ramban was executed during the second COVID wave amidst many challenges of labor shortage and restriction on movement of supplies. A cluster of 17 dormitories in G+2 dimension with a capacity of 3,600, the Yatri Niwas at Chandrakot is a state-of-the-art facility which shall provide a huge relief of Shri Amarnath Ji Yatra in Ramban. Each dormitory has a capacity of 216 bunk beds fitted with all accessories, 640 toilets and washrooms. Today, the Honorable Lieutenant Manoj Sinha shall dedicate the facility to the pilgrims of the Shri Amarnath Ji Yatra on the eve of the beginning of Sanjay 2022 tomorrow.
निर्माण का संकल्प है जारी, है पैर जमीन पर, आसमां को छूने की है तैयारी। साल 2000 CPWD has a proud legacy of being the principal department for public works execution and administration throughout the country for the central government. Our projects are varied in scale and complexity, including buildings, bridges, roads, and hospitals. We have several processes like works life cycle management, asset management, cadre management, vendor management, materials management, and maintenance management. Some of the tasks pertaining to these processes are already being done online. Now, we have felt a need to fully automate all the processes to keep pace with technological advancements and to align with the government's Digital India initiative. There are several in-house applications and central government websites and portals that we leverage. The department realizes the benefits of integrating all the applications into a single platform. Implementation of an end-to-end ERP solution called eNirmit will automate the processes and integrate various applications and portals to enable a seamless experience. eNirmit stands for Nationwide Intelligent Resource Management with Information Technology. With eNirmit, overall cost of running down by eliminating duplication of work and bringing down time and cost overruns in projects. Many in-house applications are PIMS, VIGMIS, ERS, To please put your mobile phones on silent mode. VIPs are about to arrive in our plenary hall. We are about to begin our inaugural session. I request everyone to please be seated.
देवियों और सज्जनों, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 168वें स्थापना दिवस समारोह में हमारे बीच आज उपस्थित आदरणीय विशेष अतिथि माननीय सचिव महोदय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री मनोज जोशी जी, आदरणीय महानिदेशक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग श्री शैलेंद्र शर्मा जी, विशेष महानिदेशक श्री राजेश कुमार कौशल जी, विशेष महानिदेशक श्री अनंत कुमार जी तथा इस समारोह में उपस्थित सभी अधिकारीगणों एवं अतिथियों का मैं शहना शमीम, सहायक वास्तुक, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को सूचित करना चाहूंगी कि माननीय राज्य मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री कौशल किशोर जी किसी कारणवश आज समारोह में नहीं आ पाएंगे तथा माननीय केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी इस समारोह में कुछ विलंब से पधारेंगे। अतः समय के अभाव के कारण इस कार्यक्रम को आंशिक रूप से शुरू कर रहे हैं। आज केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपने 168 वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा इस उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आइए हम सब मां सरस्वती की वंदना के साथ समारोह की शुभ शुरुआत करते हैं। या
बहुत ही मधुर एवं मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति। अतिथि देवो भव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय महानिदेशक श्री शैलेंद्र शर्मा जी से कि वह हमारे बीच उपस्थित विशेष अतिथि आदरणीय सचिव महोदय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री मनोज जोशी जी का पौधा भेंट कर स्वागत करें। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति अवार्ड सेरेमनी है। इस कार्यक्रम हेतु मैं माननीय सचिव श्री मनोज जोशी जी से निवेदन करूंगी कि वे पुरस्कृत अधिकारियों को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फॉर बेस्ट प्रोजेक्ट्स तथा कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन करें। इसके लिए मैं मंच पर विराजमान माननीय सचिव महोदय तथा सभी वरिष्ठ अधिकारी गणों से अनुरोध करूंगी कि वह मंच के आगे की ओर आ जाएं। For the category for best completed project, first prize goes to pre-engineered building complex at KG Marg and Africa Avenue, New Delhi. May I have on stage Shri SP Chaudhary ji, Special Director General, Project Region, Delhi. We have on stage Shri SP Chaudhary, Special Director General, PRD. Second prize goes to Industrial Buildings for Helicopter Manufacturing Factory under Phase 1, Stage 2 for HAL at Tumakuru, Karnataka. We have on stage Shri P.K. Naidu, Chief Engineer, Bangalore. Third prize goes to Lecture Hall Complex for IIT Indore, Simroy Campus, Indore. Shri J.J.R. Meena, Chief Engineer, Bhopal. Shri J.J.R. Meena, Chief Engineer, Bhopal, we have on stage. Fourth prize goes to Deficient OTM Complex and Office of ADG for Indian Coast Guard Enclave, Malkapuram, Visakhapatnam. We have on stage Shri Vivekanand, ADG Region, Hyderabad. Special prize goes to Dormitories Cluster Type Pre-Engineered Steel Structure Light Gauge for Shri Amarnath Ji Shrine at Ramban, Jammu and Kashmir. May I have on stage Shri Mohan Lal, Superintending Engineer, Jammu and Kashmir. For this project, I would like to mention this project was executed in difficult terrain and extreme weather conditions in a very short period of time. Access to required construction materials and equipments was even very big challenge. For the best E&M service completed projects category, first prize goes to Sensor Technology Development Center on turnkey basis for CMTI at Tumkur Road, Bengaluru. We have on stage Shri S.N. Rai, Chief Engineer, Bengaluru. Second prize goes to Atal Akshay Urja Bhavan, New Delhi. May I have on stage Shri P.B. Singh, Additional Director General, Region, Delhi. We have on stage Shri P.B. Singh, Additional Director General, Region, Delhi. Third prize goes to Pre-Engineered Building Complex at KG Marg and Africa Avenue, New Delhi. May I have on stage Shri Manohar Lal, Chief Project Manager, PRD. Shri Manohar Lal, Chief Project Manager, PRD. Fourth prize goes to Indian Institute of Information Technology, Trichy. Fourth prize in this category goes to Indian Institute of Information Technology, Trichy. May I have on stage Shri C.K. Verma, Special Director General, Region, Chennai.
For the Best Interior Completed Project category, first prize goes to interior works of partitions, false ceiling, furniture, audio-visual equipment, etc. for Software Technology Parks of India at Electronic City, Bangalore. We have on stage Shri O.P. Tripathi, ADG, Bengaluru. Second prize in this category goes to pre-engineered building complexes at KG Marg and Africa Avenue, New Delhi. May I have on stage Shri Vijay Prakash Rao, Senior Architect, Project Region, New Delhi. Third prize in this category goes to renovation of office space for National Health Authority at 4th floor Jeevan Bharti Building, New Delhi. May I have on stage Shri Neeraj Kalia, Assistant Engineer, Region, Delhi. For the category of Best Architectural Planning and Design Project, first prize goes to construction of 400-bedded ESIC hospital at Vishakhapatnam. For the receiving the award, I request Shri R.K. Kaushal, Special Director General, Chennai, to please receive the award. Second prize in this category goes to construction of 184 multi-storied flats for Honorable MPs at BKS Marg, New Delhi. May I have on stage Shri Ashok Kumar Sharma, Chief Architect, Region, Delhi. Third prize in this category goes to proposed engineering block for National Institute of Technology at Karaikal, Puducherry. May I have on stage Srimati Valli Isaki, Architect, Project Region, Chennai. Srimati Valli Isaki, Architect, Project Region, Chennai. Fourth prize in this category goes to proposed National Police Academy at Karve, Nepal. May I have on stage Shri V.P. Rao, Senior Architect, Project Region, New Delhi. Shri V.P. Rao, Senior Architect, Project Region, New Delhi. For the category of Best Landscape Design Project, the award goes to Arogya Vanam at Rashtrapati Estate, New Delhi. May I have on stage Shri P.S. Sodhi, Architect, Region, Delhi. Shri P.S. Sodhi, Architect, Region, Delhi. For the category of Best Service Center Project, first prize goes to Service Center 350 Electrical GPRA HSR Layout, Bangalore. May I have on stage Shri S.N. Rai, Chief Engineer, Bengaluru. Second prize in this category goes to Service Center 1373 Electrical GPRA KK Nagar, Chennai. And to receive the award, may I have on stage Shri C.K. Verma, Special Director General, Region, Chennai. Shri C.K. Verma, Special Director General, Region, Chennai.
Third prize in this category goes to Service Center 481 Civil GPRA Kormangla, Bengaluru. May I have on stage Shri S.N. Rai, Chief Engineer, Bengaluru. Fourth prize in this category goes to Service Center 1479 Electrical GPRA Colony, Bharat Nagar, Bhopal. May I have on stage Shri J.J.R. Meena, Chief Engineer, Bhopal. In the Best Performance category, officers selected for Commendation Certificate, may I have on stage Shri Gurbaksh Singh, Chief Engineer, IIT Project Ropar. Shri Gurbaksh Singh, Chief Engineer, IIT Project Ropar. Shri Shailesh Kumar Ugrejia, Superintending Engineer, Border Fencing Circle 2, Bhuj. May I have on stage Shri Shailesh Kumar Ugrejia, Superintending Engineer, Border Fencing Circle 2, Bhuj. Shri Anurag Kumar, Superintending Engineer, IIT Bhilai Project. Shri Anurag Kumar, Superintending Engineer, IIT Bhilai Project. May I have on stage Shri Manish Kumar Rawat, Superintending Engineer, Development Project Circle, New Delhi. We have on stage Shri Manish Kumar Rawat, Superintending Engineer, Development Project Circle, New Delhi. May I have on stage Shri Arvind Kumar Singh, Executive Engineer, Civil, Meghalaya Central Division. Shri Arvind Kumar Singh, Executive Engineer, Civil, Meghalaya Central Division. May I have on stage Shri Rajiv Sharma, Executive Engineer, Civil, Central Vista Project Division 3. May I have on stage Shri Ashwani Mittal, Executive Engineer, Civil, Central Vista Project Division 1. May I have on stage Shri Srinivasulu Vade, Executive Engineer, Civil, Hyderabad 2. Shri Srinivas Vade, Executive Engineer, Civil, Hyderabad 2. Next in this category is Shri Aman Kumar, Executive Engineer, Electrical, Bangalore. He's not with us right now. On his behalf, Mr. Shri Nivas Sulu will be receiving his award. Shri M. Sivakumar Reddy, Executive Engineer, Electrical, Trichy. Shri M. Sivakumar Reddy, Executive Engineer, Electrical, Trichy.
Shri Anurag Singh Gangwar, Architect, Project Region, New Delhi. We have on stage Shri Anurag Singh Gangwar, Architect, Project Region, New Delhi. Srimati Valli Isaki, Architect, Project Region, Chennai. We have with us on stage Srimati Valli Isaki, Architect, Project Region, Chennai. Now, officers and staff selected for commendation certificate in headquarter category. May I have on stage Shri Yashpal, Executive Engineer, Office of Directors, S&D. We have with us on stage Shri Yashpal, Executive Engineer, Civil, Office of Director, S&D. Shri Mohinder Kumar, Financial Officer, Office of Director, Finance. On stage we have with us Shri Mohinder Kumar, Financial Officer, Office of Director, Finance. Shri Kumar Shekhar, Assistant Section Officer, EC1A. Shri Kumar Shekhar, Assistant Section Officer, EC1A. Shri Sumit Kumar, Assistant Section Officer, EC3. Shri Sumit Kumar. Shri Avni Kumar, Assistant Section Officer, Office of Director, Finance. Shri Avni Kumar. May I have on stage Shri Rajiv Ranjan, Senior Secretariat Assistant, Office of DG, CPWD. Shri Sunny Kumar, Multitasking Staff, Office of Director, Tech and PR. Shri Sunny Kumar. सभी पुरस्कृत महानुभावों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित विशेष अतिथि महोदय एवं सभी वरिष्ठ अधिकारीगणों से निवेदन है कि वह कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी प्राकृतिक एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी अपना कार्य कुशलतापूर्वक करते आए हैं। इसी संदर्भ में प्रस्तुत है रन ऑफ कच्छ में किए निर्माण कार्य की एक झलक। आइए देखते हैं ये फिल्म। कच्छ का ये रण हिंदुस्तान का तुर्र है। रंग बिरंगी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर कच्छ को दुर्लभ बनाती है, तो इसकी आबो हवा और दलदली क्षेत्र इसे दुर्गम बनाते हैं। इस जटिल परिस्थिति में इलाके की सुरक्षा और निगरानी करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। यहां बॉर्डर पर बाड़ लगाने का कार्य चल रहा है, जिसकी जिम्मेदारी सीपीडब्ल्यूडी को दी गई है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की देखरेख में लगभग 350 किलोमीटर का काम पूरा कर लिया गया है एवं 26 किलोमीटर का कार्य तेजी से चल रहा है। प्राकृतिक और विषम भौगोलिक परिस्थिति की वजह से यहां निर्माण कार्य करना अत्यंत ही मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन अपनी कार्य क्षमता और गुणवत्ता के बल पर सीपीडब्ल्यूडी ने असंभव को संभव कर दिखाया है।
बॉर्डर फेंसिंग के साथ जवानों के पेट्रोलिंग के लिए सड़क का निर्माण भी किया गया है। जवानों के लिए आवास के तौर पर बॉर्डर आउटपोस्ट का निर्माण भी विभाग ने किया है। मुख्य मार्ग से बॉर्डर आउटपोस्ट तक लिंक सड़क का निर्माण किया गया है, जिससे किसी भी मौसम में बॉर्डर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अंधेरी रात में जवानों को गश्त लगाने में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए विभाग ने फ्लड लाइटिंग भी लगाई है। सड़क और भवन निर्माण में गैबियन, जियो ग्रिड और जियो टेक्सटाइल जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो यहां की दलदली और रेतीली मिट्टी को रोकने और समुद्र की धारदार लहरों के विरुद्ध मजबूत निर्माण के लिए जरूरी है। यहां की मिट्टी हवा और पानी में मौजूद सल्फेट एवं क्लोराइड के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए निर्माण में फैक्ट्री में तैयार उच्च ग्रेड व निम्न परमेबिलिटी के प्रीकास्ट आरसीसी का प्रयोग किया जा रहा है। इस इलाके में दूर संचार तंत्र का अभाव है। ऐसे में अगर किसी वाहन में खराबी आ जाए तो दूर दूर तक पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ की तेज खारी हवाओं के थपेड़ों और चिलचिलाती धूप में रहकर कार्य का निष्पादन करना केवल सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों के असाधारण जज्बे के कारण ही संभव है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की पहचान है गुणवत्ता के साथ साथ समयबद्ध तरीके से निर्माण कार्य, राष्ट्र सुरक्षा में निरंतर अग्रसर। सीपीडब्ल्यूडी। CPWD has a proud legacy of being the principal department for public works execution and administration throughout the country for the central government. Our projects are varied in scale and complexity, including buildings, bridges, roads, and hospitals. We have several processes like works life cycle management, asset management, cadre management, vendor management, materials management, and maintenance management. Some of the tasks pertaining to these processes are already being done online. Now, we have felt a need to fully automate all the processes to keep pace with technological advancements and to align with the government's Digital India initiative. There are several in-house applications and central government websites and portals that we leverage. The department realizes the benefits of integrating all the applications into a single platform. Implementation of an end-to-end ERP solution called e-Nirmit will automate the processes and integrate various applications and portals to enable a seamless experience.
eNIRMIT stands for Nationwide Intelligent Resource Management with Information Technology. With eNIRMIT, overall cost of running the department will cut down by eliminating duplication of work and bringing down time and cost overruns in projects. Many in-house applications like PIMS, VIGMIS, ERS and WBPMS will be discontinued and data from these applications will be migrated to eNIRMIT. CPWD Seva will be retained and integrated with eNIRMIT. In addition, central government applications and portals such as Public Financial Management System, Bhavishya, which is a pension sanction and payment tracking system, RTI Online, Legal Information Management and Briefing System, Public Grievances Redressal, Online Computerized Monitoring System, E-Sampada, Central Public Procurement Portal, Bharat Kosh, Ministry of Corporate Affairs Database, E-Dharti, Land and Development Office, and Government E-Market Portal will get integrated in eNIRMIT. Frequently used applications like AutoCAD, StatPro, Revit, eTabs, Midas, RCDC, Microsoft Project, Primavera and Building Information Modeling will also be integrated so that all the data will be available in eNIRMIT. Digitization and integration with IT applications will allow us to capture in-process data. This data will facilitate real-time management of various operations, electrical and mechanical services, and equipment involving all our stakeholders, including contractors, consultants, vendors, clients, allottees, officials, and project managers. This will help in improving safety at work site. It will ensure adherence to standard operating procedures through modern IT tools like data analytics, machine learning, and artificial intelligence. eNIRMIT will continuously receive data from Internet of Things instrumentation, supervisory control and data acquisition, building information modeling, building management system, visual imagery equipment installed at work sites, and mobile applications used by site engineers. This data will be used for data analytics to perform preventive maintenance, breakdown analysis, and real-time project monitoring and control. In addition, this data will be used for machine learning algorithms. This will help in decision-making in real time, efficient deployment of resources, early alerts for worker safety at site, and better quality assurance using artificial intelligence. eNIRMIT will enable us to leverage our vast organizational learning for the preparation of designs, estimates, tender documents, and standards. We have a vision of using artificial intelligence to improve the architectural, structural, and service design of our buildings. It will ultimately help bring efficiencies in usage of materials, improve levels of detailing in design, optimize water consumption in residential colonies and offices, improve recycling of sewage, and manage construction and demolition waste. CPWD foresees eNIRMIT as an exemplary IT solution of Digital India. Thank you for watching. भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और देश के भविष्य की दिशा तय। मौजूदा संसद भवन को बनाया गया था 100 साल पहले। इन 100 सालों में आवश्यकताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेयर और रेनोवेट किया जा चुका है, पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं, पर ना ही मुमकिन है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सुधार कर उसे अपग्रेड करना। इसीलिए आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं,
बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा। और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंपरोधी सिस्टम के मुताबिक Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30% तक कम करने और अगले 150 से ज्यादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा। नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% से भी अधिक होगी। मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्यालय और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहाँ पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल, पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र। मतलब कि नया संसद भवन होगा 130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला, हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला, क्षेत्रीय कला, कौशल और कारीगरी की अद्भुत झलकियों को अपने कण कण में समाने वाला और विशाल स्पेस और चेंबर्स से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतांत्रिक लक्ष्यों को साकार करने वाला। जैसे Constructed at a cost of rupees 47 crore, SASP Yatri Niwas at Chandrakot is one of the fastest projects completed in UT of Jammu and Kashmir. The project was conceived during the visit of the Principal Secretary to the Honorable Lieutenant Governor on March 1921 to Ramban, and after site selection it was decided that a fully operational Yatri Niwas on the pattern of Yatri Niwas at Bhagwati Nagar at Jammu is the need of the hour in Ramban district, in view of the fact that the district often witnesses stoppages due to landslides, shooting stones, and due to mudslides due to ongoing works on the four-laning of the National Highway by NHAI, and also because of the suspension of the Holy Yatra due to inclement weather at the Holy Cave. During traffic disruptions, it becomes a huge challenge to lodge the pilgrims in Ramban district till restoration of movement of convoys. Immediately after the site was finalized, the work on execution of the project was entrusted to CPWD in the month of April 2021 and is now being completed today in only 14 months of record time. It is pertinent to mention here that the project with support and facilitation of the district administration Ramban was executed during the second COVID wave amidst many challenges of labor shortage and restriction on movement of supplies. A cluster of 17 dormitories in G+2 dimension with a capacity of 3,600, the Yatra Niwas at Chandrakot is a state-of-the-art facility which shall provide a huge relief to the pilgrims of Shri Amarnath Ji Yatra in Ramban. Each dormitory has a capacity of 216 bunk beds fitted with all accessories along with 640 toilets and washrooms. Today, the Honorable Lieutenant Governor of J&K Shri Manoj Sinha shall dedicate the facility to the pilgrims of the Shri Amarnath Ji Yatra on the eve of the beginning of Sanjay 2022 tomorrow.
देवियों और सज्जनों, तालियों के साथ स्वागत कीजिए आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी का। मैं अनुरोध करती हूं आदरणीय महानिदेशक श्री शैलेंद्र शर्मा जी से कि वह हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री हरदीप सिंह पुरी जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। धन्यवाद सर। आज इस पावन अवसर पर जब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपने 168 वर्ष पूरे कर लिए हैं, आइए हम सभी अपनी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके करते हैं। मैं मंच पर आसीन सभी अति विशेष अतिथियों से अनुरोध करती हूं कि वह दीप प्रज्वलन का इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप सभी का धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करती हूं आदरणीय महानिदेशक श्री शैलेंद्र शर्मा जी से कि वह कृपया इस समारोह को संबोधित करें। आज के इस समारोह में मैं स्वागत करना चाहता हूं आवासन और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी का, आदरणीय सचिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय श्री मनोज जोशी जी का, और सभी अतिथिगण CPWD के पूर्व अधिकारी और साथियों का। ये पूरे हमारे CPWD परिवार के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम 168 साल अपने पूरे कर रहे हैं, और इस अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी एवं आदरणीय सचिव महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद समय निकालकर हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। 168 वर्षों का सतत निरंतर आगे बढ़ना किसी भी संगठन के लिए बहुत बड़ी बात है। आज का दिन हमारे विभाग की सफलताओं और उपलब्धियों को याद करने का अवसर है और अपने क्लाइंट्स को विभाग की गतिविधियों से परिचित कराने का भी अवसर है। हमारे माननीय मंत्री जी और सचिव महोदय ने सदैव CPWD को एक उत्कृष्ट और अग्रणी इंजीनियरिंग विभाग के रूप में उभरते हुए देखने की इच्छा जाहिर की है। इस मौके पर मैं बताना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान हमने आज तक का सबसे अधिक 18,814 करोड़ रुपए का वर्कलोड हासिल किया है। इस साल हम इसको टारगेट को 20,000 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। सुगम्य भारत के तहत CPWD ने सार्वजनिक इमारतों को सुगम्य बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। हमारे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के 211 बिल्डिंगों को और दूसरे मंत्रालयों के 808 बिल्डिंगों में सुगम्यता का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा करीब 200 सरकारी इमारतों में हमने 20 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर पैनल्स भी लगाए हैं, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए महत्वपूर्ण पहल है। समय के साथ सार्थक बने रहने के लिए
एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाना भी बहुत ज़रूरी है और हम अपने सभी कार्यों में एनर्जी एफिशिएंट और ग्रीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। CPWD ने 46 नई निर्माण और 14 इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तकनीकों को अपनाया है जो एनर्जी एफिशिएंट हैं और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी हैं। इन नई तकनीकों का CPWD की परियोजनाओं में उपयुक्तता के आधार पर हम प्रयोग करते जा रहे हैं। अभी जैसा हमने एक मूवी में भी देखा ERP के बारे में, माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के स्वप्न को साकार करने की दिशा में CPWD सभी गतिविधियों को डिजिटाइज करने की ओर बढ़ रहा है और ERP को हम मिशन मोड में लागू कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम सारे जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट में ले आएंगे। हमारे टेंडरिंग, ऑक्शन, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, डिटेल्ड एस्टीमेट, कोलैबोरेशन टूल और लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल को रोल आउट कर दिया गया है और बाकी डेवलप हो रहे हैं। हमारा टारगेट है कि अगले साल तक हम इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दें। ERP का हमारा सिस्टम पूरे देश के निर्माण कार्यों के लिए हमें लगता है कि एक पैराडाइम चेंज का मौका है। एक बार हमारे CPWD में इम्प्लीमेंट होने के बाद हमारा विश्वास है कि दूसरे विभाग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका वाइड एप्लीकेशन होगा और पिछले 168 वर्षों की भांति CPWD आगे भी पर टेक्नोलॉजी के एक नए लेवल पे भारत के निर्माण में अपना योगदान देती रहेगी। हमने पिछले साल में 20 से अधिक MOUs पर साइन किया है जिसमें कुछ नए क्लाइंट्स हैं जैसे टाटा मेमोरियल सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन वगैरह वगैरह। कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए आज भी भारत सरकार के मंत्रालय, ऑटोनोमस बॉडीज़ और विभाग CPWD को प्राथमिकता देते हैं। हमारे इंजीनियर्स ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी काम करके दिखाया है, फिर चाहे वो रन ऑफ कच्छ में रोड बनाने का काम हो या ऊंचे पहाड़ों पे बॉर्डर पर इंडो चाइना बॉर्डर पर रोड बनाने का काम हो या कोविड के दौरान एसेंशियल सर्विसेज और हॉस्पिटल्स को चालू रखने का मेंटेनेंस का काम हो। कोविड के दौरान बहुत कम समय में हमने ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाकर उपलब्ध कराए। हमारी वर्कफोर्स की लगन और निष्ठा ने विभाग को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। हाल ही में अफ्रीका एवेन्यू और कस्तूरबा गांधी पर डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का काम, जयपुर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग का काम और नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय के हम लोगों ने काम किए हैं। इसके अलावा कई IIT, एम्स और आइसर हम बना रहे हैं जैसा कि आप सब जानते ही हैं। नेपाल में पुलिस एकेडमी, म्यांमार में विमेन पुलिस एकेडमी और सूडान में हॉस्पिटल के काम जो हमारी कुछ विदेशी परियोजनाएं हैं इस समय प्लानिंग स्टेजेस में है, आगे एग्जीक्यूशन इनका प्रारंभ होने वाला है। हमारे जो आज की तारीख में चल रहे प्रोजेक्ट हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जैसा कि आप सभी जानते हैं सेंट्रल विस्टा है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम पूरा हो चुका है। नए संसद भवन, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव, GPO A2, KG मार्ग वगैरह का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है और हम जल्दी ही हम सारी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इन कामों को पूरा करेंगे। हमारा मानना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके कर्मचारी, इसलिए हम इसको ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की बेहतरी के लिए भी प्रयासरत हैं। हम काफ़ी लंबे समय से चल रहे कोर्ट केसेस के कारण विभिन्न स्तरों पर रेगुलर प्रमोशन में देरी की समस्या से अवश्य जूझ रहे हैं, पर हमने पिछले साल में करीब 505 JEs को AE के लेवल पे प्रमोट किया है। अगले कुछ महीनों में हम और फर्दर प्रमोशन फैसिलिटेट करने के लिए LDCA एग्ज़ाम करने जा रहे हैं। EEs की कमी के कारण हमें ज़रूर सब जगह परेशानी हो रही है। इसके लिए मंत्रालय और CPWD दोनों ही लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम भी अपने अधिकारियों से भी अपेक्षा रखते हैं कि वो कोर्ट केसेस से बचें और इस काम में हमारा सहयोग दें। मैं इस अवसर पर CPWD के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने काम के क्षेत्र में उत्कृष्ट और असाधारण प्रदर्शन किया और जिसके लिए उनको बेस्ट परफॉर्मर और कमेंडेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। साथ ही जिन प्रोजेक्ट्स को पुरस्कार दिया गया है उनसे संबद्ध सभी अधिकारियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमको CPWD के सब लोगों को इस अवसर पर संकल्प लेना होगा कि सालों के परिश्रम से जो हमें ये CPWD की विरासत मिली है और ये परंपरा हमें हमारे साथ जो आ रही है इसको हम आगे ले जाने में अपना प्रयास जारी रखेंगे और सहयोग करेंगे। मैं एक बार फिर CPWD परिवार की ओर से मंच पर आसीन अतिथियों, पूर्व अधिकारीगण और उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने समारोह में पधार कर इसकी गरिमा बढ़ाई। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 168 वर्ष का गौरवमय इतिहास राष्ट्र हित के कार्यों में समर्पित रहा है। आज हम एक फिल्म के द्वारा इस स्वर्णिम इतिहास के कुछ पन्ने आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसके लिए आप सबके समक्ष प्रस्तुत है CPWD की ये फिल्म। नव निर्माण का संकल्प है जारी, है पैर जमीन पर, आसमां को छूने की है तैयारी। साल 2022 देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेज गति से विकास मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और इसी गति को अपने नव निर्माण से नया आकार दे रहा है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। 168 वर्षों का अनुभव, दक्षता और कल्पनाशीलता के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए सतत समर्पित। आजादी के 75 वर्षों में विभाग अपने निर्माण कार्य से देश की आधारभूत मौलिक संरचना का विकास और विस्तार करता आया है। जब औपनिवेशिक काल में नई दिल्ली को राजधानी के तौर पर विकसित करने की संकल्पना की गई, तो इससे जुड़े निर्माण कार्यों को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन एवं अन्य महत्वपूर्ण भवन इसकी मिसाल है। CPWD के एनुअल डे सेलिब्रेशन पर मैं सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वे विभाग की प्रगति के में इसी प्रकार अपना योगदान देते रहेंगे। 1854 से ये विभाग राष्ट्र के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान देता आ रहा है। CPWD ने वर्तमान समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वयं को विकसित किया है। वर्तमान समय में देश के लिए एक नए संसद भवन की आवश्यकता को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को देश के नए संसद भवन का शिलान्यास किया था और आज इसका निर्माण कार्य पूरे जोर शोर से चल रहा है। इस वर्ष नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। नए संसद भवन के साथ अन्य भवनों जैसे कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एवं वाइस प्रेसिडेंट एन्क्लेव आदि का निर्माण कार्य भी तेज गति से किया जा रहा है तथा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम पूरा कर लिया गया है। इन सभी भवनों का निर्माण उदीयमान नव भारत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा परियोजना अपने आप में नए भारत के गौरव का प्रतीक होगी। राष्ट्र निर्माण और प्रगति के लिए सदैव समर्पित CPWD, जिसका लक्ष्य है आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता, उचित लागत एवं समय सीमा में कार्य संपादन। 1 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा राष्ट्रपति संपदा में मानव शरीर के लिए आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को परिभाषित करने वाले आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया। देश की विरासत को संजोते हुए विभाग ने सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित विहंगम प्रधानमंत्री संग्रहालय के भवन का निर्माण कार्य किया है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल 2022 को किया। रक्षा मंत्रालय के नई दिल्ली में KG मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य किया गया है। CPWD न केवल इस मंत्रालय के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक है, बल्कि देश का सबसे पुराना सरकारी संगठन है, महत्वपूर्ण संगठन है। और CPWD बहुत से ऐसे काम किए हैं जो इतिहास में दर्ज हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं।
विभाग के बेहतरीन निर्माण कार्यों को देखते हुए नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने राज्य में होने वाले निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी CPWD को सौंपी है। विभाग द्वारा न सिर्फ विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों आदि के लिए, बल्कि विदेशों जैसे कि नेपाल में नेशनल पुलिस एकेडमी, म्यांमार में वुमेन पुलिस एकेडमी और सूडान में मेंटल हॉस्पिटल आदि निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में CPWD ने अपने आप का नवीनीकरण किया है। अब 18 से 20 हजार करोड़ के साल में वर्क कंप्लीट कर रहा है। करीब 64,000 करोड़ रुपए के वर्क इन हैंड है। नई नई टेक्नोलॉजीज यूज करके साल भर से कम की टाइम में भी बिल्डिंग्स कंप्लीट कर पा रहा है। ज़्यादातर बिल्डिंग्स टाइम पे कंप्लीट हो पा रही हैं। वर्क एग्जीक्यूशन और क्वालिटी के साथ काम कर पा रहा है। हम सेंट्रल विस्ता में, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में, सभी में CPWD का काम देख रहे हैं। भारत सरकार द्वारा विभाग को सामरिक व दुर्गम स्थानों जैसे कि रन ऑफ कच्छ, हाई ऑल्टीट्यूड बॉर्डर रोड्स आदि कार्यों को भी सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में भी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। दिल्ली के जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन कॉलोनी के पुनर्विकास के 7 परियोजनाओं में से 4 परियोजनाओं त्यागराज नगर, मोहम्मदपुर, श्रीनिवासपुरी व कस्तूरबा नगर का क्रियान्वयन CPWD द्वारा किया जा रहा है। DDO मार्ग स्थित 120 टाइप 7 क्वार्टर्स का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। 2004 की भीषण सुनामी के उपरांत विभाग ने तत्परता के साथ रिहैबिलिटेशन व रिकंस्ट्रक्शन के कार्य भी किए। विभाग देश के 70 शहरों में फैले लगभग 1.5 लाख क्वार्टर्स व 80 लाख स्क्वायर मीटर के ऑफिस एरिया का रखरखाव 1078 सेवा केंद्रों के द्वारा ई-सेवा के माध्यम से करता है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 168वें स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये विभाग के लिए हर्ष का विषय है कि हमने वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक का सबसे अधिक यानी 18,814 करोड़ रुपए का वर्कलोड हासिल किया है। ये लगभग असंभव सा दिखने वाला कार्य CPWD परिवार के समन्वित प्रयासों और समर्पण से ही संपन्न हो पाया है। विभाग को इस ऊंचाई तक ले जाने के लिए मैं आप सभी के योगदान की सराहना करता हूँ। पर्यावरण संरक्षण सदैव विभाग की प्राथमिकता रही है। विभाग द्वारा निर्माण कार्यों के दौरान पर्यावरण मानकों का पालन किया जाता है। इसके तहत निर्माण क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ड्यूअल पाइपिंग सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जीरो डिस्चार्ज एंड जीरो वेस्ट की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जा रही है। नवनिर्मित भवनों में रूफटॉप सोलर पैनल का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है ताकि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिल सके और आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति की जा सके। भारत सरकार के सतत विकास से जुड़े लक्ष्यों के अनुसरण में विभाग अपने सभी भवनों को कम से कम 3 स्टार गृह मानकों के अनुसार बनाता है तथा इसके लिए इसने अपना एक ग्रीन रेटिंग सिस्टम भी विकसित किया है। विभाग का हेरिटेज सेल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सभी हेरिटेज बिल्डिंग्स के मेजर रिपेयर के कार्य में मार्गदर्शन करता है। विभाग ने नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज को अपनाया है तथा इनके स्पेसिफिकेशंस व शेड्यूल्ड रेट्स को भी बनाया है, जिसको देश भर में अपनाया जा रहा है। विभाग द्वारा पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण भवनों व सार्वजनिक स्थलों जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, रविंद्र सेतु, बनारस के प्रसिद्ध घाटों आदि पर डायनेमिक फसाद लाइटिंग का कार्य किया गया है। आज से लगभग 1 शताब्दी पूर्व राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक और प्रसिद्ध इमारतों के निर्माण में CPWD ने अहम योगदान दिया था जब दिल्ली राजधानी बन रही थी। आज एक बार फिर हम सेंट्रल विस्टा की महत्वपूर्ण इमारतों को बना रहे हैं। ये हमारे लिए अपनी विरासत को एक नया आयाम देने का अभूतपूर्व अवसर है। कार्य
और निर्माण में पारदर्शिता विभाग की पहचान रही है। विभाग खुद अपने कार्यों की ई गवर्नेंस के माध्यम से डिजिटल मॉनिटरिंग करता है। साथ ही विभाग अपने सभी कार्यों को पूर्णतया डिजिटाइज करने व रियल टाइम मॉनिटरिंग व कंट्रोल के लिए ERP का कार्यान्वयन कर रहा है। मुख्यालय स्थित कमांड सेंटर से देश भर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति पर लगातार निगरानी रखी जाती है। CPWD, गवर्नमेंट सुंदर नर्सरी मैनेजमेंट ट्रस्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अनुरक्षित प्रख्यात सुंदर नर्सरी को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार और सतत विकास के लिए विशेष मान्यता से सम्मानित किया गया है। जब कोविड महामारी अपने चरम पर थी, उस मुश्किल समय में भी विभाग ने देश भर में निर्माण और अनुरक्षण का कार्य जारी रखा तथा इसके अलावा लगभग 100 स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सामाजिक जिम्मेदारी और जागरूकता विभाग की कार्य प्रणाली का अभिन्न अंग है। CPWD वाइव्स एसोसिएशन द्वारा श्रमिकों के बच्चों के लिए निशुल्क भोजन, शिक्षा व खेल कूद की व्यवस्था की जाती है। साथ ही ये संस्था जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध भी करती है। को अतिभारः समर्थानाम अर्थात कार्यक्षम व्यक्तियों के लिए अत्यधिक काम का बोझ क्या हो सकता है। हमारा संकल्प है कि हम इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे और सभी अपेक्षाओं और चुनौतियों पर खरे उतरेंगे। अमृत महोत्सव वर्ष में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग पूरी तरह राष्ट्र निर्माण के लिए कृत संकल्प है। 168 वर्षों से लगातार हर कदम देश के विकास और निर्माण कार्यों के लिए सतत तत्पर CPWD, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। अब मैं आदरणीय सचिव महोदय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री मनोज जोशी जी से निवेदन करूंगी कि वह इस समारोह को संबोधित कर इसकी गरिमा बढ़ाएं। आदरणीय मंत्री जी, DG साहब, स्टेज पर बैठे हुए स्पेशल DGs, CPWD के सभी ऑफिसर्स, मुझे याद है 10-15 साल पहले CPWD की रेपुटेशन वर्क में अच्छी होने के बावजूद काफ़ी काम भारत सरकार में दूसरे स्टेट्स में भी CPWD की बजाय काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जा रहे थे। पर पिछले 10 साल में माहौल काफ़ी बदल गया है। अब हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर काम भारत सरकार के ख़ास तौर पे या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के भी वापस CPWD को दिए जा रहे हैं। CPWD की परफॉर्मेंस में पिछले 10 सालों में जो चेंज, मॉडर्नाइजेशन हमें देखने को मिला है, आई थिंक वो हम देख सकते हैं आज कि वापस प्री एमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंस्ट्रक्शन इन इंडिया वापस CPWD बन गया है। मुझे बड़ा हर्ष है इस बारे में। So CPWD is now the first choice for giving works for any government organization, including central government in India. ये परिवर्तन काफ़ी चीज़ों में देखने को मिलता है। डिज़ाइन पार्ट, आर्किटेक्चरल पार्ट, use of new technologies, timely completion of buildings, looks of the buildings from outside, इन सभी में जो आजकल नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, पिछले 5-7 साल में बनी हैं, हमें देखने को मिलता है। So I would like to congratulate all the officials of CPWD for bringing about this change in CPWD. At the same time, let me point out what CPWD is not doing good as per my definition of what I see in the buildings. One is
we have very large number of buildings, and their upkeep and maintenance. When you go outside the country, you see buildings, you see the professionally buildings are, O&M maintenance takes place, the condition those buildings are, that's different from our buildings. You can argue those buildings were made over a period of time, which saw a large number of changes. They are not in a position to being done O&M in a proper way. But that is one area in large number of government buildings I find the maintenance or O&M is not professional compared to what you see around the world. Now, how do we change that? At an appropriate costing, because it's not that the present management O&M is costing us less. It is costing us a lot. And all those ad hoc changes in everyone's rooms, in every corridor, in every tile work which we do, it costs us a lot, including in the houses. So how do you bring a modern management practice in that, including for the new buildings which we are constructing? I think that is one area CPWD needs to deliberate and bring out an improvement, whether it's a flooring, it's a maintenance, it's the electrical systems, it's the air conditioning systems. I think we need to have a serious look because you can't demolish and reconstruct each and every building. These buildings have been constructed over a period of time and they are going to last for another decades. And so I think an efficient, cost-effective management of the buildings is very, very important. So that's one aspect of CPWD I would like to see improvement in next few years. The second part which I find still a problem area in CPWD is the quality of contractors and that leading to delay in works. Now there are few good contractors who do timely work, but that's all. Below that, we have large number of contractors who get into a cash problem, who have poor management practices, which leads to delays in the work. Then the cost estimates in an EPC contract or a different contract goes haywire. Or even in item rate contracts, there are problems. So that's another area. How do we bring about an improvement? Because you are as good as the contractor. You are not constructing the building, contractor is constructing the building. If there is a problem with the contractor, if things are stuck, if contractor is losing money, we have a problem. And that problem you can see across the country in large number of buildings, whether CPWD does it or NBCC does it or any other organization does it. So I think the improvement in contractor capacity, how do you do that? I think you need to deliberate on that. What better pre-qualification criteria you bring in, what better, whether through RBI or through other mechanisms, through banks, how do you enable contractors to have access to capital? They keep underbidding, you can't do anything about it, but if they are losing money, the building doesn't get completed, it gets left half. So that's a second area of concern which I find in building construction. The third area which CPWD pleasantly I found in last a month or so when I started finding out about use of new technologies. CPWD has done well, and also we have issued an order that all works above 100 crores should be done through EPC contracts, they should be technology neutral, but that's a good English. It doesn't happen just with issuing an OM that work should be technology neutral, all should be EPC contract. It's still not happening. So, and most of our modern technology is limited to aluminum frames, which still is not a very new technology. It's quite an old technology. Instead of wo jo pehle lakdi ke fatte use karte the, now it's a good aluminum frame which is being used. Beyond that, yes, use of modern technology. We are done in KG Marg, Africa Avenue with the steel frames, steel structure, but steel structure has its limitations. It's very good when you want to finish building in 6 months' time, but otherwise costs are higher. So
use of other technologies, tunnel form or completely 3D constructed technologies, how do you bring them in? So probably you need to have specific design and tenders for that. But I would like us to adopt a policy that for large buildings, obviously small buildings you can't use other than aluminum frame or some other technologies, but larger buildings, we decide specifically what technologies we are going to use and use appropriate design tools while designing the building and while tendering the building. So I think we need to deliberate how CPWD should be the pioneer in new technologies. Right now, private sector is the pioneer in new technologies. They are using far more new technologies in housing projects than what we are doing. So I think we need to catch up with what private sector, large contractors in metros are doing. It's not happening in small cities, it's not happening by small contractors. Large contractors, large metros, particularly housing projects, are using far better technologies than us because it's cost effective. So I think we need to catch up, use appropriate way to do that, need to deliberate on how to do it, but that is what Honorable Prime Minister wants us to adopt new technologies and be a pioneer, and let's do that. Because we should show, once CPWD does it, state PWDs would do, all other organizations would do. So that is the third area I would like to see changes in CPWD. Training of CPWD officials and capacity building is very, very important because finally it's the management practices and us. That is what counts. So I think a lot of management practice improvement has happened. A lot of computerization, IT services, integration, ERP has happened, and we need to keep doing that. And same time, I think further improvement in CPWD's capabilities is required because there are a large number of very good engineers, but there would be laggards also. And we need to bring everyone together and do as much of capacity building for those people, whatever capacity building they require specifically, not very general type of trainings. And with that, I'm sure CPWD would continue to strive greater heights as it has done in last 10 years. And I offer my best wishes to all the CPWD employees to keep doing that. Thank you. धन्यवाद सर। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले चरण की ओर। इसमें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की पुस्तकों का विमोचन तथा कुछ ईआरपी मॉड्यूल्स को लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग निर्माण और अनुरक्षण कार्यों के अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए विभिन्न पुस्तकें प्रकाशित करता है तथा इन्हें समय समय पर अपडेट भी करता है। ये सर्वविदित है कि देश में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और विभिन्न सरकारी विभाग CPWD द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का उपयोग करते हैं। इस वर्ष CPWD 13 पुस्तकों को अपडेट करके उन्हें प्रकाशित कर रहा है। अतः मैं संबंधित अधिकारियों से निवेदन करती हूं कि वह पुस्तकों के विमोचन में विशेष अतिथि गणों की सहायता करें। क्वालिटी अश्योरेंस मैनुअल 2022 के लिए श्री दिवाकर अग्रवाल, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। The first book that we are going to release is Quality Assurance Manual 2022. May I have on stage Shri Divakar Agarwal, Superintending Engineer. Quality Assurance Manual 2022. CPWD Works Manual 2022 के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री VP साहू, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। श्री VP साहू, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। CPWD Works Manual 2022.
ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर CPWD वर्क्स मैनुअल 2022 के लिए श्री सीताराम राव, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर CPWD वर्क्स मैनुअल 2022। जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2022 फॉर EPC प्रोजेक्ट के लिए श्री दिवाकर अग्रवाल, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2022 फॉर EPC प्रोजेक्ट्स। अगला प्रकाशन है रूल्स फॉर एनलिस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स इन CPWD 2022। श्री VP साहू, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। रूल्स फॉर एनलिस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स इन CPWD 2022। रूल्स फॉर एनलिस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स इन CPWD 2022। अगला प्रकाशन है कंपेंडियम ऑफ ड्यूटीज 2022 के लिए श्री मनीष कुमार, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। कंपेंडियम ऑफ ड्यूटीज 2022। CPWD specifications for modular OT 2022 श्री विमल कुमार, चीफ इंजीनियर CSQ इलेक्ट्रिकल। CPWD specifications for modular OT 2022। CPWD specifications for nurse call system NCS 2022 श्री सौरभ कुमार, SE इलेक्ट्रिकल TLQA। CPWD specifications for nurse call system NCS 2022। CPWD specifications for nurse call system NCS 2022। अगला प्रकाशन CPWD specifications for pneumatic tube transport system PTTS 2022 के लिए श्री राजीव गुप्ता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल TLQA। CPWD specifications for pneumatic tube transport system 2022। अगला प्रकाशन है CPWD specifications for medical gas pipeline system 2022 श्री विमल कुमार, चीफ इंजीनियर CSQ इलेक्ट्रिकल। CPWD specifications for medical gas pipeline system 2022। अगला प्रकाशन है दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स E&M 2022 श्री सौरभ कुमार, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर TLQA। दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स E&M 2022। अगला प्रकाशन है दिल्ली एनालिसिस ऑफ रेट E&M 2022 के लिए श्री AK मीना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल TLQA। दिल्ली एनालिसिस ऑफ रेट E&M 2022। अगला प्रकाशन निर्माण भारती के लिए श्रीमती मिताली सैकिया, आर्किटेक्ट टेक एंड PR। निर्माण भारती।
इसी क्रम में अब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP यानी ई निर्मित के लिए इसी क्रम में अब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP यानी ई निर्मित के लिए 6 नए मॉड्यूल्स का उद्घाटन किया जाएगा। ई निर्मित यानी नेशन वाइड इंटेलिजेंट रिसोर्स मैनेजमेंट थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा विभाग की सभी कार्य प्रणालियों को ऑनलाइन किया जा रहा है, जो कि आधुनिकतम क्लाउड बेस्ड फुल्ली इंटीग्रेटेड फुल्ली स्केलेबल मॉडल पर आधारित है। इसके लिए मैं DDG ERP श्री मनु अमिताभ को अनुरोध करूंगी कि वह माननीय मंत्री महोदय का इन 6 मॉड्यूल्स के लॉन्च में सहयोग करें। E-Nirmit collaboration portal is for architects, engineers, consultant, clients and contractors for consultation and collaboration. Estimation tool is to frame detailed estimates from approved digital drawings through automatic takeoff sheets. Sanchar is for intra-departmental correspondence and for initiation and approval of projects. Residential accommodation inventory tool is to bring online the installed civil and electrical items inventory. Transfer and posting tool is to simplify transfer and posting procedures for auto generation of readiness list. Cost index tool is for CPWD authorities who are empowered to issue cost indices. आप सभी का बहुत बहुत आभार। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग प्रतिवर्ष उत्कृष्ट योगदान देने वाले कर्मचारियों को DG मेडल से सम्मानित करता है। इसी क्रम में इस बार 9 कर्मचारियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। अतः मैं एक एक करके उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी तथा मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय एवं सभी विशेष अतिथिगणों से अनुरोध करूंगी कि वह कृपया मंच के आगे की ओर आ जाएं और विजेताओं को पुरस्कृत कर उनका मनोबल बढ़ाएं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री P. कनका राजू, चीफ इंजीनियर, विजयवाड़ा, DG मेडल के लिए। श्री P. कनका राजू, चीफ इंजीनियर, विजयवाड़ा। श्री सत्येंद्र प्रसाद गुप्ता, डायरेक्टर डेवलपमेंट ERP। इन्हें भी DG मेडल मिल रहा है। श्री सत्येंद्र प्रसाद गुप्ता, डायरेक्टर डेवलपमेंट ERP। श्री अशोक कुमार धिमन, सीनियर आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट रीजन, चेन्नई। श्री अशोक कुमार धिमन, सीनियर आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट रीजन, चेन्नई। श्री सुधीर कुमार तिवारी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट डिवीजन। श्री सुधीर कुमार तिवारी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट डिवीजन। श्री प्रदीप कुमार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ERP। श्री प्रदीप कुमार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ERP। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री राजू प्रसाद, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, गांधीनगर।
श्री राजू प्रसाद, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, गांधीनगर। श्री पुष्पराज कश्यप, आर्किटेक्ट, रायपुर। श्री पुष्पराज कश्यप, आर्किटेक्ट, रायपुर। श्री विमल कुमार तुली, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हेडक्वार्टर। मंच पर हैं श्री विमल कुमार तुली, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हेडक्वार्टर। श्री राहुल, एलडीसी, हेडक्वार्टर। आप सभी गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद एवं सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई। अब मैं अनुरोध करूंगी मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री हरदीप सिंह पुरी जी से कि वह इस समारोह को संबोधित कर हमें अनुग्रहित करें। मनोज जोशी जी, शैलेंद्र शर्मा जी, श्री राजेश कुमार कौशल जी, श्री आनंद कुमार जी, friends from the construction industry and other distinguished invitees who have joined us here today. I extend my warm congratulations to the Central Public Works Department on its 168th annual day. The CPWD has steered important public works over the years and has become a leading enterprise in the field of construction management. Anyone who is familiar with the history of construction in India will know that the CPWD, which was established as a central agency in July 1854 by Lord Dalhousie to undertake various public works, has played a central role in the construction of not only pre but post-1947 India. As one of the oldest serving government departments, the CPWD has witnessed many shifts in the socio-political landscape of India. From the days of British rule to post-independence and now to the 21st century, the CPWD has been a constant and reassuring presence. The true character of an institution is reflected in how well it adapts itself with time. And I think whatever be our assessment of the work of the CPWD in the past, it has certainly continued to evolve to meet the needs of the nation. In the National Capital Region of Delhi, it has executed projects such as Rashtrapati Bhavan, North and South Block, and Parliament House, among other iconic projects. Even today, it is making a significant contribution to governance through the rejuvenation
of the Central Vista project, with the development of the new Parliament building, the Vice President's enclave, and Common Central Secretariat. The work being done by the CPWD has crossed national boundaries, and to give an example, the construction of the Afghan Parliament, the Parliament in Afghanistan was constructed by the CPWD and remains a sign of India's unwavering friendship with that nation. When I joined the Ministry of Housing and Urban Affairs in September 2017, I was told that my distinguished predecessor, Shri Venkaiah Naidu ji, the current Vice President, used to use the expression that India was witnessing an urban renaissance. Since I'm a student of history, I was a little more cautious with words. I said, urban rejuvenation tak to sahi hai, but renaissance means something even more fundamental. But aaj, when I have completed nearly 5 years as Minister for Housing, I've not completed, I'm nearing 5 years as Minister for Housing and Urban Affairs, another month or two. मुझे पूरा विश्वास है कि in effect we are witnessing an urban renaissance. उसके कई कारण हैं. एक तो आप देखिए ये जो अभी हमारे गवर्नेंस आर्किटेक्चर है, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और पुराना पार्लियामेंट बिल्डिंग, their construction dates back to a conceptualization which was undertaken at the beginning of the last century. By beginning of the last century, I mean construction शायद 1916 या 1919 में शुरू हुई हो, बट उसका डिजाइन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और किन लोगों का आर्किटेक्चरल माइंडसेट था, they were not built for an independent India, and that is reflected very much in the kind of construction that we got. It is beautiful, it represents history, culture, all that is good. But yesterday when the Honorable Prime Minister was unveiling the emblem on the top of the building, one of my colleagues asked, ये emblem इस building पे पुरानी पार्लियामेंट में नहीं था. भाई साहब, पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग ब्रिटिश राज ने अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाई थी. This one is being built by us. और मैं समझता हूं the new parliament building, which is the temple of democracy, parliament is the temple of democracy, and all these constructions which go by the general term of Central Vista Avenue, Parliament, new Defence Enclave, Executive Enclave. I am now convinced कि वेंकैया जी जो अर्बन रेनेसांस की बात करते थे वो सही थी, और शायद हम लोग कंजर्वेटिव थे, because what we are witnessing is not only a rebuilding of most of the national capital region. Now, as part of my responsibilities, they don't fall under the CPWD, but some of these issues are dealt with by the two landowning agencies, DDA and LNDO. आप देखिए, दिल्ली की आबादी 1947 में करीब 8 लाख थी. When the first wave of people came in as part of the partition and a newly independent India, it went up to 22 lakhs. Today, Delhi's population, whenever the census comes, should be in the vicinity of 2 crores. So all this construction, much of it, people came in as part of a vibrant, autonomous demographic shift, urbanization which took place. People came from rural areas, from
tier 2, tier 3 cities, and settled in Delhi. Not all of it was organized. Most of it was not even planned. And you had the rise of unauthorized colonies, and these are issues which we are also dealing with. Land pooling, jahan juggi wahi makan, regularization of unauthorized colonies, etc. That is work which is proceeding well. But even those parts of Delhi which were constructed after 1947, and those are some of the buildings in which the CPWD and my ministry sits, those will be part of the new landscape that we will see. And I think it is really a movement which can be called a renaissance. Also, if you look at the scale, I think it was an American think tank, or I don't know, somebody who did an analysis said that India's in the process of constructing 700 to 900 million square meters of urban space every year. Shashi, who was it whose assessment this was? It'll come back to me in a minute. But I had it cross-checked. I had the previous director of the National Institute of Urban Affairs check it out, and it's correct. Every year, this kind of construction till 2030. And I think it is in that context that the points made by the secretary, when he spoke of the need to ensure, apart from constructing good buildings, upkeep and maintenance. He also spoke about, in broad terms, the need to select good contractors and to ensure that these construction activities, and I'm very proud of that, since I became minister and these big projects that we've done, they are being completed on an average in what, 22 months' time? Now, CPWD may not be the constructing agency. It has an oversight construction management role. But to perform that role also, you have to be deeply involved, both with the QRs, etc. You will always have the tendency for people to come and want to change QRs, ye yahan change kar do, wahan change kar do. Sometimes it's out of a desire to keep improving and to keep bettering. But everybody should realize that if you want to construct a building within the time and cost limits, there are limits to how many changes you can effect. I personally have been in the battlefront. I've had to, very often face situations where I had to say, no, this can't be done, irrespective of who the owner of the building or who's going to be the occupant of the building. Because as the ministry, we have ultimately a line responsibility to ensure timely and cost-effective completion. I also wanted to share my personal views, which have been, both this, I keep discussing this with the Director General and Secretary ever so often and with other colleagues, that clearly there is a visible and demonstrated improvement and appreciation for the role of the CPWD. That's there. But a point which I make often to the Secretary is that whenever you're trying to improve and reform, you will face certain difficulties. And those difficulties invariably will come from people who have a vested interest in that system of doing things being changed. It will come when you want to use newer technologies. They will come and tell you, ये इसको मत इस्तेमाल करिए, बहुत महंगी पड़ेगी. It will come from people who don't submit their bills on time, and at the end of the day, they want to control the whole system. When you try to improve it, well, they will start writing, silly letters about the people who are trying to do the reform. I'm facing it all the time, but it doesn't affect me one bit because I know where those letters are coming from. Secondly, I think this is very important that we realize today we are not constructing for today and tomorrow. We are constructing for the next 250 years. Therefore, any slippage on quality,
Now, there's no point turning around saying we are only the management agency, it's, the responsibility of the contractor. No. Both are involved. And I must say, I'm very happy that in the last 5 years, I've only had, not on the CPWD side, but somewhere else, one case. But I think it's one case too many. Oversight is not a paper function. Oversight means whoever is given the responsibility of supervision and oversight and control has to be very clear about it. You must have the same level of commitment and due diligence which you would if you were constructing your own building, perhaps to a higher standard. But I'm very happy that the CPWD has acquitted, with one or two bad examples, has acquitted itself very well. But now you should prepare another, I think 168 years is a fair amount of time. You were central to the construction, at least in the capital, of what came before 1947. You are now very much involved in the construction which is going for the next 200, 250 years. And I gave you the example of Afghanistan, but I don't see why taking advantage of this appreciation, you can't also tender for big projects outside the country. I must share with you an example. I mean, Director General knows this. I was on a political mission for 3 days, 2 days ago, and one of the new buildings constructed there, it's a medical facility. The Director General told me that we are very keen that when the current people who constructed it, their management is coming to an end, contract I think in a few months' time, that they would like the CPWD to do the upkeep and maintenance. I was very happy, but I don't like making commitments. Partly my experience and as a civil servant, you never make commitments unless you understand what you're doing. So I called the DG. And I said, yeah, it's a very prestigious institution, one of the All India Institute of Medical Sciences. And I said, ki DG sahab, ye request aa rahi hai, she said ki main pata karta hu. That's also a good sign. He didn't say immediately, a minister calling a very senior engineer and say, haan, ji kar rahe. No, he said, main check karta hu. And he told me today it could be doable. So what I'm saying is that the world of maintenance and upkeep and maintenance, which the Secretary was referring to, is not a small in-house function to be performed. There is a big industry out there. By and large, you will find that buildings which are constructed, Secretary was saying a lot about the O&M, etc., and I totally agree with him. He and I have discussed it. If you are maintaining something that is 100, 200 years old, you should be aware of what its potential is. And if you have a maintenance manual or a schedule, it has to look at the need. There's no point saying that I 10 saal isme kharcha nahi kiya aur paisa bacha liya. No, that's penny wise and pound foolish, because you will end up later on having ignored certain things, and then the whole thing you'll have to change the whole piping, etc. So I think I'm very encouraged, I must say. I go to a lot of functions, including of the CPWD, but jitni aapne aaj kitabein aur wo manuals aapne unveil karwayi hain, I think they fit at least half a library shelf. So pehle to I want to give you congratulations. और मैंने ये भी देखा कि आपकी वो जो थी हैं, ये सब उस किस्म की publications, and they should be all online, frankly, because आजकल जो construction industry है आपकी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ. It has moved largely to that, so nobody actually has physical books except to show in their offices. I think that's a very good sign, which means apart from the physical construction work that you are managing, that you are undertaking, you are also applying the CPWD mind to the codification of those, whether you call them SOPs or procedures, I don't know what your language is. It's a very good sign. So I want to congratulate you on that. I must also say that, and by the way, anyone who's listening to my speech saying, I congratulate you, I'm also saying, you did very well in the past, you're doing very well now, but the whole message is also don't rest on your past achievements or glory. I think the best is still to come. And I must say, this is all the more important now
because we are looking forward to the next 25 years of India's growth story. And I must share with you my own sense. हम सोच रहे थे कि अभी अमृत महोत्सव की celebrations होंगी, पर अभी वो तो अभी we are in the midst of them, and the Honorable Prime Minister is already talking about Amrit Kal, and he's talking about the next 25 years. So I think you should look at the next 25 years and you vision your own, yourselves as an organization, and if you look at what you can contribute, and I think, that's why I say, I think the best is yet to come. So heartiest congratulations to all of you, to the DG, to my senior colleagues here, and I'm very happy that senior CPWD personnel from around the country are here. I wish I could spend more time with you, but then I've reached a stage in life where I don't control my diary any longer, but heartiest congratulations and God bless. Thank you. धन्यवाद सर मार्गदर्शन के लिए। हम कार्यक्रम के अगले चरण में सभी अतिथि गणों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित करेंगे। इसके लिए मैं महानिदेशक श्री शैलेंद्र शर्मा जी से निवेदन करती हूं कि वह कृपया विशेष अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित करें। अब मैं विशेष महानिदेशक श्री राजेश कुमार कौशल जी से अनुरोध करती हूं कि वह कृपया श्री मनोज जोशी जी को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित करें। धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय विशेष महानिदेशक श्री राजेश कुमार कौशल जी से निवेदन करती हूं कि वह इस समारोह में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। Honorable Minister for Housing and Urban Affairs, Shri Hardeep Singh Puri ji, respected Shri Manoj Joshi ji, Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, respected Shri Shailendra Sharma ji, Director General CPWD, Shri Anant Kumar ji, Special DG and ENCPWD, dignitaries, guests, former senior officers of CPWD, colleagues, ladies and gentlemen. It is my honor privilege to present a vote of thanks at the concluding moments of this historic inaugural function on the occasion of 168th CPWD Day. We express our profound gratitude to the Honorable Minister, Ministry of Housing and Urban Affairs for gracing this occasion. Sir, under your patronage as a head of our family, mentor and guide, we have realized our goals successfully and managing our resources quite well. We are confident that under your continuous leadership, CPWD shall keep providing its best services toward the nation building. We are confident that with your presence today, your kind support and our resolve to excel, we will touch new heights. We express our sincere thanks to you for spending your valuable time with us. We assure you that your kind words and advice shall go a long way in boosting the morale of CPWD family. We express our gratitude to Shri Manoj Joshi ji, Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, for his kind presence amongst us during this function. Sir, we are thankful to you for your being our constant source of encouragement. I take this opportunity to thank our Director General CPWD, Shri Shailendra Sharma ji, without whose guidance it would not have been possible to organize this function. He has provided constant support to CPWD officers
in all the initiative and organizers have taken for organizing this annual day celebrations. I joined the organizing team to express my gratitude for all the interest he has shown in working out the minutes of details of this function, which made it success today. I am thankful to senior officers of various departments who have joined us today function and expressed their deep affiliation to CPWD department. We assure you that we shall continue to provide our best services to you. I am thankful to our team of officers and staff who have been instrumental in organizing this event successfully. I express my sincere thanks to all of you. My sincere thanks to all the former senior officers present here today, showering their blessings on us. I feel overwhelmed in expressing my gratitude to them. I am thankful to all the officials belonging to all the CPWD wings from architecture, civil, electrical, mechanical, horticulture, and administration, some of them who have come far and wide to participate in this function, expressing their resolve to take the department to new heights. I also take this opportunity to congratulate and thank the awardees who bringing laurels to the institution. I hope the recognition of their abilities today will not only re-energize them to achieve greater heights in the department, but also motivate the other CPWD members to follow their footsteps in coming years. Last but not least, I am deeply thankful to the team of Vigyan Bhawan, security personnel, press and media, officer in charge, and publishers of CPWD publications released today, and all other members who have worked hard in this successful organization of this function. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद सर। हम इस समारोह में सम्मिलित सभी अतिथि गणों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस समारोह में पधारकर इस समारोह की गरिमा बढ़ाई एवं इसे सफल बनाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। जलपान की व्यवस्था फॉयर में की गई है। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि कृपया जलपान के लिए फॉयर की ओर प्रस्थान करें। जलपान के बाद केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारीगण तकनीकी सत्र के लिए 12:30 बजे हॉल नंबर 6 में एकत्रित होने की कृपा करें। धन्यवाद।